Hello students, welcome. Yesterday we have completed our previous chapter, that is chapter number 7, linear equation. Okay, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8, ratio and proportion. First of all, in today's video we are going to discuss the basic terms regarding to the ratio and what is mean by actual ratio and what is mean by proportion. Okay, so first of all we will concentrate on our first name, that is ratio. So what is ratio? Have you known what is fraction? Yes, you know what is fraction. Fraction has the two terms, that is numerator as well as denominator. When if it is a mixed fraction, then it also consists of a whole number. But in a ratio, it is also like a fraction. ये क्या रहता है? एक टाइप का फ्रैक्शन ही रहता है. Why? Because it has a numerator as well as denominator. उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या सिंपली रेशियो लिखने का और एक अलग फॉर्म होता है. Understand? So the relative size of two quantity expressed as the quotient of one divided by the other is called the ratio between them. Means what is ratio? अगर आपको कोई दो चीज को कंपेयर करना है, जैसे कि I have two mangoes and Samir, other person, have three mangoes. So the ratio of mangoes between me and that Samir, is 2:3. Means I have two mangoes and Samir have three mangoes. This type of form is known as ratio. It can be also expressed as 2/3. Okay, इसी टाइप के रेशियो को 2/3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और इसको रीड कैसे करना? 2:3. This is raised as 2:3 and this is 2/3. Basically here, likewise in a fraction we don't want a denominator equal to 0. वैसे यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या नहीं चाहिए? 0 के इक्वल नहीं चाहिए. क्या नहीं चाहिए? 0 के इक्वल नहीं चाहिए. और यहाँ पे आते हैं. अब दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज रेशियो. Here while we write a fraction, this term is known as numerator and this is denominator. Likewise or similarly here in a ratio, this first term is known as antecedent. Okay, in a ratio, our first term is known as antecedent and the second term is known as consequent. Okay, the first term is known as antecedent and the second term is known as consequent. Understand? यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म होगी रेशियो की उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट और जो सेकंड टर्म होती है उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट. फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट. ओके, नाउ जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास अगर 2 मैंगोज है और समीर के पास 3 मैंगोज है, तो उस टाइम पे मैं रेशियो में कैसे एक्सप्रेस करूंगा? दैट आई हैव 2 मैंगोज एंड समीर हैव 3 मैंगोज. तुम उसको अगर एक्सप्रेस करना है तो मैं इस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूंगा. अंडरस्टैंड? और आई कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और फ्रैक्शन. अंडरस्टैंड? 2/3. ओके, नाउ here if I gave you find the ratio of hairpins to the bindi packet. Ab if there are 6 hairpins and 8 bindi packet in a bag. Find
the ratio of bindi packet to pins, or you can say hair pin. Okay, now what you have to find? There, first of all, situation is there are 6 hair pins and 8 बिंदी पैकेट्स इन अ बैग. एक बैग में 6 हेयर पिन्स है और 8 बिंदी पैकेट्स है. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड रेशो. आपको क्या करना है? रेशो फाइंड आउट करना है. बट किसके बीच में का? बिंदी पैकेट और हेयर पिन में का. अब बिंदी पैकेट और हेयर पिन में का लिखना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बिंदी पैकेट को फर्स्ट लिखना पड़ेगा. सो दैट इज 8 is to hair pins 6. 8 is to 6. 8 is to 6. You can express it as 8 upon 6. And if you solve it, अगर आपको इसका simplified form निकाला, likewise 3 to the 6 तो कितना आएगा? 3. 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 है. इसको भी 2 से डिवाइड किया तो 4. So 4/3, or you can say 4 is to 3. So here 8 is to 6 equal to 4 is to 3. ये दोनों क्या है? Like ratio और इक्विवेलेंट रेशियो. इसको क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट रेशियो. जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता था कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. जैसे 10/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते थे? इसको सिंपली किसी तो भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते थे. दैट इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. दैट इज 2/1. सो दिस 2/1 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 10/5. तो ऐसे ही आप क्या करते थे? जो आपको फ्रैक्शन का फॉर्म है उसको सिंपली एक कॉमन टर्म से, एक कॉमन न्यूमरल से डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते थे. अंडरस्टैंड? तो यही सेम मेथड आपको इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करते वक्त करनी. सिंपल है. आपको जो भी रेशियो गिवन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 8.8:6 था तो उसको आपको पहले किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? फ्रैक्शन के फॉर्म में. देन उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना पड़ेगा, दैट इज 4/3, और फिर उसको उस रेशियो के फॉर्म में लिखना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको अगर किसी भी रेशियो का सिंप्लीफाइड फॉर्म या इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल दैट हाउ वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, हियर इफ आई हैव 100:25, अगर आपको इस टाइप का रेशियो गिवन है तो आपको अगर इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? सिंपली उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे. ओके, यू नो दैट 25 इज डिवाइडेड बाय 25 एंड 100 इज डिवाइडेड बाय 25. 25 से दोनों डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाय 25 एंड 100 इज डिवाइडेड बाय 25. यू विल गेट 4/1. सो यू कैन राइट 4:1. सो आप इसको डायरेक्टली भी क्या लिख सकते? 100:25 is equal to 4:1. Okay, these two are equivalent ratio. अब ये क्या हो गया? Antecedent, and this second term is known as consequent. Understand? And in the next video we are going to discuss how to compare two ratios. Okay, thank you students. I hope you understand.